in the chapter life process, we have to learn about following things. First, we have to understand what is life. Means when an organism or a body is said to be alive. What is the condition for the organism or a body to be alive? Then what are the various activities involved or activities done by the various parts or component of that organism to keep the body alive? Those activities are called as life process. And the life process, the broader life process that we have to learn is the very first thing, the organism needs some energy. So that energy is supplied by intake of food. That intake of food is called nutrition. Now, the food that we are taking is just the source of energy. That is not the energy in itself. And this energy is required by each of the cells in our body. Cell can understand or cell can receive only the simple food like glucose, fatty acid, peptic acid, these things. Cell cannot take directly the idli, dosa, the bigger raw material that we are eating. So the source of food like idli, dosa, chapati, whatever we are taking, they are called as nutrition or the source of nutrition. Just the intake of this source of energy is called as nutrition. So this raw material have to be converted into the simpler form like the glucose, peptic acid, fatty acid, which can enter into our cells. So that conversion of the complex food like idli, dosa, chapati into the simpler food like glucose, fatty acid, peptic acid is called as digestion. So digestion is other thing. Now, after this digestion, the complex food converted into the simpler food. Then this simpler food means this conversion is taking place in our system called digestive system. So student, this digestion is in our digestive system. So we have to learn about how is this digestive system, how is the digestion. So in our digestive system, broadly in our stomach and intestine, the bigger food particle gets converted into the simpler food particle. Simpler food particle, remember it is the glucose. So that glucose diffuses into the blood, means on the inner lining of our stomach or the intestine, continuously there is blood circulation. So the digested food means glucose, peptic acid, fatty acid, they are able to diffuse from the intestine into the blood. Now this blood is circulating throughout our body, means blood is connected to each and every cells of our body and it is in continuous circulation. As a result, taking the food from the intestine or our digestive system, food means the digested food, the blood is transporting that digested food to each and every cells of our body. That is done by blood, and blood have to be circulated throughout the body for their transportation. For that we have this system called circulatory system, means the blood tubes. Student, we are knowing that blood is pumped by our heart. So heart is pumping the blood from one side to the another so that it can circulate through the closed tube. These tubes are artery, arterioles, vena, vena cava, and many more capillaries, veins that we have to see also. So that system is called as circulatory system. One more thing is there. This food which have reached to the cell means the glucose
have to be converted into energy so that the cell can function, cell can remain alive. But for conversion of this digested food, means glucose, to the energy form, there is a chemical reaction called respiration. We have learned in chemistry. Respiration is what? Where the glucose burns or glucose react with the oxygen to give carbon dioxide and energy. Carbon dioxide, water and energy. Reverse of the photosynthesis. That is occurring in each and every cells of organism. Through that process, means for the conversion of this glucose into energy, it needs the oxygen. So how the oxygen have to be reached to different cells? For that, we have to take the oxygen. That comes the breathing system called respiratory system, through which the air enters into our nose, it goes to the heart, basically the lungs, there it diffuses again into the blood. Then blood is again transporting this oxygen to different cells. This way, the cell is able to get both digested food like glucose and the oxygen. And inside the cell, this respiration occurs. So, a student, respiration doesn't mean just breathing. Breathing is just a part of respiration. So, respiration means conversion of digested food into the energy, which is occurring in each and every cells of the organism. So, the system called respiratory system we have to learn. Now, after this process, means when this digested food glucose is converted to some other form like carbon dioxide, which will generated inside our cells, but that is not useful to our body, so that have to be removed. This useless thing which is present in our body is called the waste. So these waste have to be removed. So various filters or excretory system in our body. Another thing, these waste again get dissolved in our blood, so blood need to be purified. So this purification or removal of the waste generated inside our body is called as excretory system. Keep in mind, waste generated need not be whatever we are getting the digested food and the fix that we are discharging. No, waste is also generated from each and every cells. So what are those cells? Those means what are the waste generated in this cell? They are the nitrogenous waste that we will see. They get dissolved into the blood. They are basically urea, uric acid and ammonia. These are harmful to the body. If they get collected in our body, that will create a lot of problems. So that have to be removed. So for this, the purification of blood is there. So the mechanism of purifying the blood and removing the waste and keep the pure blood inside our body is called excretion. So the excretory system is there. So this much system we have to learn. As students, in addition to this system, there are various other systems also in our body, like immune system, like glandular system, like our nervous systems. As student, these systems are not present in our syllabus, so we will not go in much more detail. They also have their specific function. About the nervous system, we have to learn in our next chapter. So there we will see. But glandular system and other system are not in much more detail. Though in next chapter, we will see that. So student, these are the things that we are going to learn. So student, whatever I had explained, please understand. Or let us start with what is alive. So student, what is life? If anyone is asking life or alive. So the term life or alive means something living. But how do we identify whether it is living organism or living body? The question is that when we will call the body or the organism is living.
So students, till now you had learned the various definition, various properties of the living being, like they reproduces, they grow, many more things are there. But these definitions or these properties have certain limitations. And the standard or the best thing which is defining this living thing is that the living thing must have some kind of motion. A student, that motion need not be the physical movement, but motion of molecule or the internal motion. Internal motion means the movement of the molecules inside the body. This definition is universal and applicable for all the living organisms. Even if we consider the plant do not have the physical motion, means locomotion, though with the help of external agency, wind and other things, they are able to just oscillate or shift slightly. But that is not the motion. So in case of plant, we have learned that the plant grow, the plant also takes food or even synthesizing their food by taking the water from their root, from the soil, means from the soil through their root, means the water molecule is having movement from the outside of that plant body, say soil, into the root to different part, means even up to the leaf. Also the leaf synthesizes the food, that food have to be go back to different parts. So student, motion or sorry, the living or alive in life is defined as it must have molecular motion. Molecular motion. This molecular motion means it is the internal movement of fluid. So that is the basic requirement. Though there can be external motion, but that external motion is not mandatory. This is the must or this is the mandatory requirement that if the organism or the body is living, some molecule from one part of its body will move to the other part. That is the basic definition. Students, so but the body or the organism may or may not have physical motion. Student, this physical motion is what? It is the external motion. External movement. This external movement is also called as locomotion. So student, locomotion is not the mandatory requirement. The other thing that we have learned that the living organism reproduces. So that is the other one. So many other features are also satisfied, but there are some exceptions. That's why the other properties may get failed. So this first property is very, very important. The other properties, right, collectively, other properties, the other properties may be their growth, then maintenance of their cells, their maintenance, like if we are getting the wound, then that wound get healed. That is what the maintenance. While we are getting any wound or cut mark, what is that? Means our cell get damaged in that place. Say if there is wound, means the cell have damaged, or even the tissue have damaged in that part. That have to be repaired. That is called what? Maintenance. A student, they grow, means the height, weight or volume, this thing is increasing. So these are the different things. So growth, maintenance, reproduction. Reproduction means they produces the younger one for the survival of that species. Etc. Many more are there. Other like respiration and other things are also there.
So respiration, etc. etc means that also means all the organism or living being also involve the nutrition that we have to understand. etc various other processes. So student, these are the other processes, but the mandatory requirement is that the organism must have a molecular motion. So example, let us understand. Let us consider even the microorganism, any microorganism you consider, like bacteria or even fungi or algae or even the protozoa, mosquito, or even the bigger organism. This is the first category. Another, animals and plants. A student, all of them have molecular motion. Molecular motion. It is this one. Means molecular movement from one part of their body to another part. Example, let us consider a fungi or even a algae or even a bacteria. Let us consider this is the bacteria. Let us consider as the cyanobacteria. They also have the flagella or the other things. Students, the molecule is able to move from one part to another part. Means whatever the molecule is here, say the food molecule which is being taken, because of this food molecule, either it will get digested and it will move to the other part. That is the primary requirement. Or it not be food molecule. If we are considering the blood of this organism, then blood must be circulating or moving or even diffusing. Okay, need not be the red color blood, that may be any kind of fluid, but surely the organism have fluid. Fluid means the liquid, and that liquid must move from one part to another part. That is the basic requirement. Even for the human, let us consider, or whatever I was explaining, this was the bacteria. Even for the fungi or even the plant also, or even the human, if we consider, then we are knowing that we have very big skeleton. Even in the human, whatever we are taking, we have this for the intake of food, and for the intake of food we have this mouth, and finally after digestion and various other process we are excreting. We have another system, means the food is moving, so movement is involved here. In addition to that, we have the blood circulatory system, which is continuously moving, the blood tubes which are moving throughout the body, means everywhere. So students, it is the blood which is continuously moving. But if we consider the virus, what is this virus? Students, virus is the organism in which there is no molecular movement. Means virus are like the tubes, means a body will be there, their body will be there. In addition to this body, there are other tubes which are coming out. But the problem with this virus is that there is no fluid movement inside this body when this virus is alone. But means when this virus is alone, there is no molecular, means no blood or no any fluid movement inside their body. The virus will not grow, means the virus is dead. So this virus, it is no molecular movement alone. Means when it is alone, there will be no molecular movement. Means it is acting as dead. So virus is whether living or non-living,
virus do not satisfy any condition for the organism to be living if it is alone. Means the virus is laying on a table, it is dead. But keep in mind, these tubes like a structure, these are the harmful things. But when this come in contact to any host, whether human or any other microorganism, like maybe the other bacteria or maybe the fungi or even on the plant also. So when this comes in contact with this virus, comes in contact with other living organism, means what, students? I am considering or drawing this virus again. So let me consider this is the virus. This have come in contact with the other organism. Let us consider this is on the hand of any person. Okay, student? Let us consider that. This is on the hand or any part of any other living organism. So students, it is our other living organism. Then what is going to happen? This is our virus. Students, when it is in contact with the other living organism, then this circulation starts. That is the peculiar feature of virus. So when it is in contact with the other living organism, then it takes the help of cell of the other living organism and the fluid start moving throughout the body of this virus with the help of host body cell. Means the other living organism on which this virus is laying is called as host. This is the host. So virus takes the help of the cell of the host and it become active or become alive. So keep in mind, so this way, if this virus is in contact with living organism, then this virus is live or alive on living host. Means if there is any other organism who is living, do not think it is the wood. Wood is the dead. But if it is the plant on which the virus have fallen, this virus become active, means it become live. Why? When the virus is independent, no molecular movement, because they do not have the circulatory system for the movement of any molecule, means the internal movement. But when it come in contact with the other organism, it takes the help of the cell of other organism, because our cells have a lot of pores. Okay, na? Outer membrane called plasma membrane is porous. As a result, it make contact with the cell and the fluid start moving through the body of this virus and the virus become living. A student, that's why there is a confusion whether virus is living or non-living. So answer is also conditional. Virus is non-living if it is independent or alone, but it is living when it is laying on any other living organism. So keep in mind. So whether virus is living, if it is asked independently, then no, virus is not a living organism. Though it is act as microbe for this condition, because when it come in contact with other living organism, it start reproducing. Okay, so all the properties of the living organism, like this reproduction, their growth, their maintenance, means the virus also become bigger. The virus produces other virus. That is happening. Even recently going on coronavirus, what is happening? Just one virus is entering in our body, that reproduces large number of other virus in our trachea or esophagus. You see,
then that creates problem. Okay, student? So the property of living arises only if the virus come in contact with the other living organism. That we have to keep in mind. Now, students, so here we have noted that the organism is said to be living if it have the property of like growth, or even if no growth, then maintenance. Then the other is reproduction, respiration. So these are the various activities performed. A student, for performing all these activities, the organism, whether microorganism or the bigger complex organism, they need some energy. Okay? So this need of energy is fulfilled by one of the process called nutrition. So we have to write, students, to keep the organism live or alive, it performs or various activities. So to keep the organism alive, it is various activities are performed by different parts of that organism, by different parts of that organism. Means to keep the organism alive. This is the main thing. Alive means this includes the term growth, maintenance, for acting or for doing the various tasks. Like for us, we are growing, that is one thing. We are performing the other jobs, that is the other thing. If we have some wound or any disease, this cell have to be recovered. So all these things can happen only if our cell is live. Means our cell is able to perform the activity. Means our muscles have that much energy. Like if you do not have the energy, you cannot go for playing. Means energy is required for all the activity, and all these activities are involved in alive. So a student, to keep the organism alive, various activities are performed by different parts of the organism, of that organism, called as, so these various activities are called as what? Life process. So what are this life process? Life process means the various activities performed by the living organism for their life or for their survival. So what they are? Students, keep in mind, all living organism needs energy to remain alive. Even we have learned in class 9th also, even the cell, which is the fundamental unit of life, to keep the cell alive, the various component of cell like mitochondria, endoplasmic reticulum, nucleus, all these cell organelles are doing certain tasks so that the cell in itself is alive. Okay, means even the energy is required by these cells. So all the living organism needs energy to remain alive. So the very first life process is what? Getting the energy, or the essential requirement for the life process or the organism to alive is to get the energy. So what is that? So right, students, what are the various life processes are? So what they are, student? The very first thing is the need of energy have to be fulfilled. So the very first one is called as nutrition. What is this nutrition? Either it is the intake of direct energy or the source of energy for the organism to remain alive. So it is intake of energy
or the source of energy. Source of energy or raw material for getting energy, Students, keep in mind the very first process involved is it had to take the energy. If energy is directly available, it can take that energy and it can survive. Like whenever we are too much tired, then we are taking the glucose. What is this glucose? It is almost a ready-made source of energy. It is the digested food, and just after few minutes we feel energetic. So a student, either directly the energy, or even some organism can directly take the energy in the form of heat or other sources, or even the light. They get the energy directly. Or the source of energy like glucose, or the raw material for the source of energy. Like for the plant, it is the sunlight, water, carbon dioxide, which is acting as the raw material, and the plant converts this raw material into the food what the plant needs. So plant need the glucose, so they synthesize this glucose, and the process is called as photosynthesis. So students, so this nutrition we have to learn in more detail. So by own means it can be the heterotrophic, or the better one is, first one is our autotrophic, means synthesize their own food. That is called as autotrophic, and the other one is heterotrophic, means make own food, means make or synthesize own food. Make means it is not the cooking of the raw material. It is whatever the needful source of energy like glucose that have to be synthesized by that organism. Make or better term is synthesizes own food. A student, the food material for the living cell is the glucose basically. So it is the glucose. Whether it is the plant cell or animal cell, all these cells needs glucose. So when the cell is alive, means the complete organism is alive. A cell is alive, tissue is alive, organ is alive. The organism or the organ system and the organism is alive. So that's why. And the food what the cell can understand is the glucose, not the dosa, rice, chapati. It is we can understand, and our digestive system can understand. So why digestive system is required, that we will see. So these are cannot make. So it takes food made by others. Students, keep in mind this food here means it is the glucose we are talking, and this glucose is prepared by the plant. That we will see in more detail. So very first activity involved is the intake of food, or the raw material, or the energy. But if we consider the complex organism like human or the bigger animal, which is quite complex, and they are performing the various activities or varieties of activities, means the more energy is required in comparison to plant. Why? The plant is alive, just at, though the plant is alive, but it is standing at one position, no physical movement. So the energy required for the physical movement is not required. So plant needs lesser energy, but animal needs more energy. More energy means directly energy, how the complex organism can take. For that, we have the mechanism of taking the raw material or the food prepared by this plant
called glucose, and glucose gets converted into energy. So the next system or the next life process involved is the digestion. Students, are also called as your digestive system. So what is this digestion? Whatever the source of food or the raw material that we are taking, like the pulses, chapati, rice. Let us consider you are taking the rice or chapati or doshe or idli, whatever we are taking. These are the raw material, and our cell cannot directly understand this. These raw material have the characteristic that these have complex or bigger molecules. Which kind of molecules? Whatever the simple food what the cell can understand. So many glucose are connected together to form the bigger glucose molecule that is called as sucrose or cellulose or the term saccharides. Okay, but saccharides term is not in your book, so you can leave it. So complex molecule, like write this as the sugar or cellulose. This is not the glucose. Means it is the combination of glucose. Like it could be C12O. Write first CHO. So write first H. Student, if we are considering the glucose, this glucose is nothing but it is the 6 carbon, 6 hydrogen and 6 oxygens. Is it okay? Student, it is 12. बहुत पहले भी आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला बतलाया है चैप्टर 1 में. So it is C6H12O6. Student, this is the simplest molecule what our cell can understand. But most of the food item that we are taking is not containing this glucose or this molecule. Rather, they contain the bigger molecule or the combination of this molecule. Like it can be the C6H22O11. It is like this. Even more bigger, C18 is also possible, but it will be in multiple of this one. So whatever the raw material or the food item that we are taking is having the complex molecule, but this molecule cannot be understood by the cells and it cannot give the energy directly, but this can give energy directly. When it enters into our blood, it will produce the energy in the form of ATPs. You might have learned in your earlier standard, but this cannot produce ATPs directly. Student, for this it have to first convert it into the glucose, then this glucose can produce ATP. So conversion of this complex food molecule, whatever we are taking through our mouth, into the simpler food molecule called glucose, this is called digestion. So next process is our digestion. So what is this digestion? Digestion simply means conversion of this complex food into the simpler food so that our cell can take place, or our cell can take that glucose and it can get the energy. So in this digestion, the complex food, right? The complex food converted into simple food. Students, this complex food, it is taken through mouth
And where this conversion takes place? In the big alimentary canal or the stomach and intestine. So this conversion takes place in the system called the digestive system. So this simple food, it is formed in our stomach and intestines. So at a stomach or intestine, these simple food molecules are formed. Again, keep in mind, as student, this complex food molecule is like the cellulose or carbohydrate. Carbohydrates. Example of this carbohydrate, whatever we have written here, this cellulose, this sugar or the complex sugar or cellulose, it must contain number of carbon greater than 6, and they are in multiple of 6. Even considering just 2 glucose molecule have combined, so it is denoted as C2H22O11. Do not just multiply all these number by 2, because while they are combining, one of the H2O molecule is removed. So rather than H24, it remains as 22, and O as 12, means 6 2s are 12. One of the O is removed, so O11. It can be like this. The better term for this is C6H12O6. So n number of molecules have combined together to form the bigger molecule. Okay, means it is like our, if I consider this is one glucose, this is other glucose, this is other glucose molecule. So this way large number of glucose molecules are connected. Our body cannot understand this chain, but our body can understand only this part. This is the glucose. As a result, these complex food have to be broken into the simple food, so that finally we will get only this is the glucose, but not as such a link or complex. But if there are n such number of link, so n links, then n such simple glucose. So a student, keep in mind, what is this digestion? The complex food means the bigger molecule is converted into the smaller molecule. If we consider the carbohydrate, it is going to produce the glucose. Means it is C6H12O6. Such large number of glucose molecules are available. Where it is available? Keep in mind, it is available in our stomach, glucose. Ready? So whatever the rice we have taken through the mouth, like we may call the rice pulses. It is a, whatever this rice we have taken, it have first converted into this in our stomach and intestine. It is no longer the rice molecule or chapati molecule. Keep in mind, students. But this is found where? This is in our stomach right now. It is in our stomach. But each of the cell need this, because this ATP is formed inside the cell, not in the stomach only. Though the stomach cell can produce this one for the stomach tissues only, or the cell which is constituting the stomach only. So students, this glucose have to be transferred to each of the cell. So how is that happening? Please understand. So student, here we have taken only one of the component of our food, like the rice and wheat that we are taking, means chapati or dosha, that contain mostly the carbohydrate. But there are other content of the food also. You might have learned in your earlier standard, it is the protein, fat, vitamin,
minerals, rough phase, and water. Total there are such 8 components. So students, so in place of this carbohydrate, keep in mind, if we have the protein, so protein is the complex molecule. This need to be converted into the peptic acid or peptides, or students, finally it will get converted into the amino acids. Amino acids. Keep in mind. So student, protein is a complex molecule which is present in your pulses or even in your egg or chicken or meat. But that protein cannot directly give you the energy, or that protein cannot directly enter inside your cell to give energy. So even these proteins molecule have to be converted into the simpler form what the cells can understand. Cells can understand only these molecules. Okay? Like, say, a student, you can understand the things like this. You are understanding the Kannada. Okay? But I could not speak Kannada. I can speak Hindi. So there must be some person or some ways by which the Hindi have to be converted into the Kannada so that you can understand. The similar thing is happening between the stomach and this cell. Our stomach and our mouth can take the rice dosage chapati, but our cells cannot understand those rice dosage chapati as the energy source. Our cells can understand only this glucose molecule. So rice dosage chapati, whatever we are taking, have to be converted into the glucose. That function is performed by our digestive system, stomach and intestine. Students, whatever dosa, rice, chapati we are taking, that is the complex food that contain the wheat, rice, maize, carbohydrate, proteins, or even the fat. But this carbohydrate, protein and fat is not the requirement of the cell. Cell cannot understand it. Cell only understand what is called as the glucose. Must mark it. It is the simple food what is being asked. And cell can understand these molecules. The cell can understand from the fat, the fatty acids, the fatty acids. The cell can understand only these molecules. So these complex food have to be converted into, these are called as the simple food. So all of these side is the simple food, which is formed by the process of digestion. So conversion of this complex food into the simple food is called as digestion. And for this purpose, we need a sophisticated arrangement called the digestive system, starting from the mouth to our food pipe, called what? Esophagus or trachea. Student, recall the name. Do not forget. So one is our food pipe, another is our wind pipe. They are different. Okay, so it enters into our esophagus called food pipe. Then it goes to our stomach, where this process occurs, or even in the intestine also. So in the stomach, this complex food start converting into the simple food. This conversion is done by a chemical process, means by adding some other chemical, this conversion occurs. It is the chemical reaction. So that chemical here involved is called as the enzymes. So enzymes.
And these enzymes comes from hormones of basically the glands. The glands from glands. So glands give certain other enzymes is nothing but it is the chemical that involve in conversion of this process. Like if you are putting the say chapati or dosa in water, it will start decaying and it will decay a bit slowly. But if you are putting the chapati and dosa in any acid, it will decay very fastly. Or in that water molecule or the water, if you are adding the other acid, it will decay fast. Okay. So that activity is performed by these enzymes or chemical which is released by the glands. These glands are present inside our digestive system, means on the lining of our digestive system. Like liver is also one of the glands. Okay, like while we are eating the food, some water produces in our mouth. So gland is there. Okay, amylose that is produced in our. So it is the saliva, which is the liquid material produced in our mouth, and it is produced by salivary gland in our mouth, or sometimes also called as salivary amylose. So these are the chemicals. So this conversion is done with the help of some chemical, and a bigger system is required. So this is from the gland with the bigger system called digestive system. So what is this digestive system that we will see? We have to learn about the human or animal. So in animal is start from the mouth. The mouth have the auxiliary thing like tongue, teeth for chewing, biting. Then this mouth to the food pipe. Food pipe. This food pipe is called as esophagus. Then this food pipe to the bag where this food get stored. So that is a stomach. Then in this stomach, the food will rest for some time, and as per requirement, with the help of sphincter muscle, which is present at end of our stomach, the food slowly enters into our intestine. So stomach to intestine are broadly classified into the two. One is called a smaller intestine to the larger intestine, and finally up to here, or even for few food molecule, the digestion starts from the mouth also. So during the flow through this system, the glucose which is being produced, so glucose is produced from carbohydrate. So in our mouth, if we are taking this carbohydrate, if the intake is carbohydrate like cellulose or sugar that we are taking, then while it is moving from this part to here, this carbohydrate will get converted into glucose, students, and whatever the other solid particles that we have to remove during our natural habit. So then it is waste is disposed. So the waste disposed or removed. Means even from carbohydrate, what we cannot take, the solid particles, that is being removed. So students, this conversion of this glucose
from the carbohydrate is occurring in this system. A student, in place of rice and chapati, if you are taking the egg that contain large amount of proteins, so this, while it is passing through this, the proteins will get converted into which one? Peptic acid. Peptic acid or peptides. And these peptides will be available where? Available either in the stomach, means the outer lining of the stomach, or intestine, or this smaller intestine. Mostly in this region it will be available. Students, if we have the fat as the fatty acid, so these things are available in our, mostly in our stomach, means these parts. Okay, now student, these parts are available mostly in these two regions, means to maximum extent. Few of the carbohydrates start digesting from the mouth. If you are directly taking the glucose, it starts digesting from the mouth. But if you are taking the complex carbohydrate, that will not digest in mouth or just partly digest. Mostly it get digested in stomach and small intestine. Okay, so in stomach and intestine, these part will be available, but these parts are taken by our mouth. Okay, now keep in mind, all of these are ready to give the energy, or these are almost ready-made source for the energy. But these can release energy only in different cells, not in the stomach itself. It is not directly the energy which is flowing from our stomach. It is these molecules which are flowing from our stomach to each of these cells. So how to flow? For that we have our transport system, so that this glucose or digested food reaches to each cell. So right, student, so here you must mark it. So the very first life process or activity is the nutrition. The second process which is involved is the digestion. During digestion, the simple food like this one are available in our stomach and intestine, but these foods have to reach to each and every cell. So for transporting these digested food, though other things are also transported like oxygen and other things that we will see later, but the first thing is the movement of these simple food to different cells of our hand or skin or head or leg or toes, everywhere. For that we have what? The transport system or blood system or circulatory system, right? The third thing that come into, or the third system is our, the third system is our transport system, or also called as circulatory system, also called as tube system. Means the blood have to flow through the tube, or our blood system, all mean the same thing. Students, the purpose, the name itself indicates it is for transporting. What have to be transported? The first requirement is the food. From where to where? Stomach or intestine to different cells. The other requirement of cell is the oxygen. So oxygen also have to be transported. That is also done by the same system. But oxygen is taken from our lungs, not from the stomach. Student, so right. So 8, what is going to happen? Just keep in mind, student, I'm going to draw from the very first thing. So raw food, or the complex food,
it have to converted into the simple food. Students, this conversion process is called as digestion. This we have learned. But during digestion, this simple food is in our stomach and a small intestine. But this food or the simple food, what are the simple food? Again, keep in mind, student, it is the glucose, it is asked, peptic acid, then peptides, amino acid, fatty acid or fattic acid. These are the mostly the simple food. But these are present right now at the stomach. So they simple food have to reach to the simple food inside each cells. स्टूडेंट अभी देखिए ये स्टोमक में है डाइजेस्टेड फूड ग्लूकोज या इंटेस्टाइन में है, लेकिन इससे कहां पहुंचना है? हर सेल तक पहुंचना है ऑफ आवर हेड, ऑफ आवर टोज. सो बी केयरफुल. सो दिस मूवमेंट इज डन बाय दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ब्लड सिस्टम. Students, this transport system or blood system that transport the simple food glucose from food to each and every cells. Though we will see that this transport system, if we consider this transport or blood system or circulatory system, this system they transfer or they carries what? The food. Now here the food means the digested food, means the simple food from a stomach, you have to write, a student, or a small intestine to each cells. Students must write it. These are the, I am writing in short and summarizing each and everything. आप केवल इसे यदि समझेंगे तो पूरा चैप्टर समझ जाएंगे, और यदि आप ये नहीं समझेंगे, नहीं ध्यान देंगे, तो बाद में आप एक एक सिस्टम को रटेंगे, आप कंप्लीट तरीके से नहीं समझ पाएंगे. सो प्लीज पे अटेंशन एंड राइट दिस पॉइंट्स, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछेंगे मैं सब कुछ इधर लिख रहा हूं, अदरवाइज आई कैन एक्सप्लेन विद दिस स्लाइड, बट स्लाइड से बहुत सारे कंफ्यूजन रह जाते हैं बच्चों को. तो स्टूडेंट्स, हमने तो ये कभी आपको ये बताया ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पर्पस, प्राइम रिक्वायरमेंट ये था कि जो सिंपल फूड स्टोमक में बना, सिंपल फूड ग्लूकोज, पैप्टिक एसिड और फैटी एसिड फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये हर सेल को पहुंचना है. ये तो पहला काम है ही, ये पहला काम हमने लिखा इसका. तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम केवल यही काम नहीं करता है, पहला तो ये हो गया. दूसरा ये भी करता है ऑक्सीजन में. स्टूडेंट, हमारे सेल को केवल ये खाना ही नहीं चाहिए. जैसे आप केवल खाना खा के रह जाएंगे क्या? खाने के बाद आपको पानी भी पीना उतना ही जरूरी है ना, तभी तो आप सेटिस्फाइड और आपका डाइजेशन हो पाता है. ऐसे ही सेल के लिए जो खाना है और द फूड फॉर दिस सेल इज आवर ग्लूकोज, लेकिन ये ग्लूकोज ऐसे ही नहीं निकल पाएगा. इस ग्लूकोज को बर्न करने के लिए सेल को ऑक्सीजन भी चाहिए होता है. Getting now? Like any dry powder, can you eat? You cannot eat unless or until you are mixing it with the milk or some sugar or some water, okay, or keeping in your mouth. Then your mouth is producing the saliva, then again it get wetted, then only you can take. ऐसे ही हमारे सेल्स को स्टूडेंट्स डायरेक्ट ये ग्लूकोज और पैप्टिक एसिड ये जस्ट ऐसे ही एनर्जी नहीं देगा. ये क्या होता है हमारे सेल्स के अंदर? If we consider the individual cell, so inside this cell, this glucose is going to react with the oxygen to give you the waste product. What is that? That is the carbon dioxide plus H2O plus
द एनर्जी, यही एनर्जी यूजफुल है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज एटीपी। तो एनर्जी तो ये यूजफुल सब्सटेंस है, दिस इज यूजफुल, but for this cell these two, even the water may be useful as the cell fluid called cytoplasm or protoplasm, but बहुत ज्यादा वाटर आया तो फिर उसके लिए यूजफुल नहीं है। So these are like our waste produced, waste produced. Where these waste are produced? These are produced inside this cell. So inside this cell, this process have to occur. Student, during this process, I had just explained the food have reached to the cell. But for completion or for getting the energy, the oxygen is also needed. So this blood also supplies the oxygen. Like food, whatever we have taken from mouth and from our stomach, it have reached to this cell. Similarly, through our nose, the air is taken. From that air, oxygen get diffused inside the blood, and again blood carries those oxygen along with this glucose to different cells. So write down the second point. Very important, students. आपको ये सब पूछे जाएंगे डायरेक्ट. So it carries food from where to where? Stomach or intestine to its cells. Then oxygen from lungs. Students, that we will see, it is alveoli, that we will see. The filter of the lungs is called as alveoli. We will see, don't worry. So this, from this lungs to each cell. Okay, students. So these are the two things which are carried from the external source to the cell. Ready? There are few other things also, but you will learn later or we will discuss later. What is the other thing? A student, see, inside this cell, this food, glucose and oxygen was taken and energy was produced. Energy is useful thing for the cell and it is stored in the battery of cell or powerhouse of cell called mitochondria. So the energy will remain inside the cell, but unwanted thing like carbon dioxide is produced. So this carbon dioxide have to be removed from the cell. So again the backward process start. Means from each cell, this carbon dioxide will diffuse back into the blood and blood will again bring it back to our lungs. And while it is, the lungs is going to take the oxygen, at the same time it will release the carbon dioxide. And finally when we are exhaling, means जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं तो उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है. तो यही प्रोसेस है. Means what? The third one is it carries carbon dioxide from where to where? Each cells to lungs. Then from this lungs to nose out. So through this nose it will go out. Okay student, आपने ये ऑक्सीजन लंग्स में कहां से आया होगा? पहले नाक से आया होगा. ओके ना, ये तो बच्चों की चीज लिखने जरूरत नहीं है ना. कीप इन माइंड स्टूडेंट्स. तो ये चीजें हमने देखा, ये हैपन, ये हो रहा है. स्टूडेंट, इसके अलावे भी देखिए, यहां तो हमने आपको ग्लूकोज बतलाया है, एक सिंपल सा चीज जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है. यदि आपने प्रोटीन्स लिए हैं, इफ वी आर कंसीडरिंग द प्रोटीन्स is the simple food which is converted into the peptic acid. So ये प्रोटीन्स तो हमारे सेल में नहीं रहेगा, ये हमारा पेप्टिक एसिड रहेगा और पेप्टाइड्स रहेंगे. तो यदि हमारे पास पेप्टाइड्स हैं तो प्रोटीन के जो कंटेंट पेप्टाइड्स होते हैं उसका एक इनहेरेंट फीचर है कि उसमें नाइट्रोजन पक्का से रहेगा. ओके स्टूडेंट, तो नाइट्रोजन कंटेंट इज देयर. यहां देखिए, जैसे ग्लूकोज मींस इट वाज कंटेनिंग दी C6H12O6,
यहाँ कार्बन एंड ये ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था। इन द सिमिलर फैक्शन जब ये प्रोटीन्स के सिंपल फूड मींस पेप्टाइड्स when they will react with this oxygen or when this peptide is going to convert into energy, then it releases the nitrogenous waste. It releases your urea, uric acid and ammonia. तो यदि जहां आपने स्टूडेंट्स नाइट्रोजन की चीजें खाई हैं यानी प्रोटीन्स खाई हैं, प्रोटीन्स लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। यहां देखिए, हमने अभी आपको इधर समझाया था ना, वेयर इज दैट स्टूडेंट्स, यू जस्ट से यहां देखिए आप कि ये इसको इवन इसमें डाइजेस्ट होने के लिए ग्लैंड को फंक्शन करने के लिए मींस ग्लैंड खुद से ही एक एंजाइम और केमिकल छोड़ता है। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये मोस्टली नाइट्रोजन के ही बने होते हैं और ये ग्लैंड तभी फंक्शन करेगा मींस ग्लैंड्स और हार्मोन्स कैन फंक्शन ओनली इफ इट कंटेन द नाइट्रोजन। और एक चीज और ध्यान में रखिए कि जितने भी सिग्नल रिलेटेड चीजें हैं वेदर डीएनए आरएनए, सिग्नल्स आर ऑलवेज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन और नाइट्रोजन की चीजें तो बहुत जरूरी है ही सेल को, but while that is converted or that is digested, it is going to give us the harmful things, means the harmful compound of nitrogen, urea, इसे अंडरलाइन कर लीजिए स्टूडेंट, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। collectively these three compounds or these three are what? The waste. But which kind of waste? These are nitrogen containing waste. So it is called as nitrogenous waste. Nitrogenous waste. So ये बहुत ध्यान में रखना. What are the nitrogenous waste? How they are produced? Nitrogenous waste are urea, uric acid and ammonia. These are produced by the conversion of this protein simple food into the energy. Okay student, or this is called as absorption. और this process students, अभी आप ये देखिए, यहां देखा आपने, ये तो हमारा इधर का सिंपल फूड है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये हमारा इधर सिंपल फूड है. Whatever we have written, these are the simple food, these are the simple food and what is being produced here, यहाँ ये जो प्रोड्यूस हो रहा है इसमें यूजफुल थिंग हमारा एनर्जी है, बाकी तो वेस्ट भी साथ में प्रोड्यूस हो रहे हैं. सो कन्वर्जन ऑफ दिस सिंपल फूड इनटू एनर्जी एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. ये भी चीजें यहीं पे आपको ध्यान में रखना है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर रेस्पिरेशन. तो इसी एरो पे लिखेंगे हम रेस्पिरेशन. So what will be the respiration next? That we'll understand. So students, I was just, let us come just one step back कि अपने को सेल के अंदर जब ये खाना पहुंच गया, खाने का मतलब सिंपल फूड, नेवर थिंक फूड फॉर दिस सेल में डोसे चपाती राइस, नो, इट इज इधर ग्लूकोज और पैक्टिक एसिड. तो ये क्या करेगा, एक यूजफुल चीज देगा. वन इज आवर एटीपी मींस द एनर्जी, जिससे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया रिचार्ज हो जाएगा, वो स्टोर करके रखेगा. जब भी सेल को एनर्जी की जरूरत होगी वो उसको एनर्जी देगा. यदि माइटोकॉन्ड्रिया के पास एनर्जी नहीं रहेगा तो फिर वो सेल मरना शुरू हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, दैट्स व्हाई वी आर फीलिंग द हंगर कि माइटोकॉन्ड्रिया और किसी न किसी ऑर्गन को एनर्जी की जरूरत है तो हम जरूर से खाना खाते हैं. ओके, अदरवाइज वी विल फील टायर्ड. और वट एवर द स्टोर्ड एनर्जी इन आवर बॉडी लाइक फैट्स इन आवर मसल्स और इवन इन आवर लीवर, वो टूट करके एनर्जी देता है कुछ समय के लिए. सो स्टूडेंट्स, सो दिस सिंपल फूड गिव्स द एनर्जी. Where this is occurring inside the cell. So this conversion of this simple food into energy is called respiration. So that is the other process. This respiration occur inside this cell. But इसी respiration होने के लिए क्या है, ऑक्सीजन चाहिए. तो हम बाहर नाक से ये ऑक्सीजन लेते हैं, ये हमारे लंग्स को जाता है और लंग्स से
ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाता है, मीन्स ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, और फिर ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम खाने के साथ साथ उसको ऑक्सीजन भी दे देता है। तो अभी सेल के अंदर सारा का सारा किचन वर्क होता है, मीन्स व्हाट, वो यूजफुल चीज एनर्जी निकाला और सेल के अंदर ये सब वेस्ट प्रोड्यूस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और नाइट्रोजीनियस वेस्ट। सो स्टूडेंट्स अभी देखिए ब्लड का काम क्या था यहाँ पे, एक तो ये था कि फूड को मीन्स डाइजेस्टेड फूड को स्टोमैक से लेकर के सेल तक पहुंचाया, ऑक्सीजन को लंग से लेकर के सेल तक पहुंचाया। स्टूडेंट्स अभी ये वेस्ट इधर जनरेट हो गया मीन्स आफ्टर द किचन वर्क बाय द सेल, तो ये वेस्ट को तो रिमूव करना है, नहीं तो सेल तो इसी वेस्ट से भर जाएगा। So this removal is also occurring or this is also assisted or transported by the blood system। यानी ब्लड क्या करेगा, फिर से जब इसको ग्लूकोज देगा उस समय यहां से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को अपने अंदर वापस ले लेगा। मीन्स आप ये समझिए कि आप अपने फ्रेंड के पास एक गिफ्ट लेकर गए और फ्रेंड ने उल्टा आपको दूसरा रिटर्न गिफ्ट दे दिया, ऐसा होता है। तो ब्लड क्या करता है, कंटिन्यूअसली मूव करता है, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी खाना लेकर के और ऑक्सीजन लेकर के एक सेल को दे रहा है, और सेल उल्टा उसको रिटर्न गिफ्ट क्या दे रहा है, सेल ने जो वेस्ट प्रोड्यूस किया वो दे रहा है। तो अभी ये ब्लड क्या करेगा, फिर से ये अपने रिटर्न गिफ्ट यानी वेस्ट को लेकर के ऐसे ऐसे ऑर्गन के पास जाएगा जहां से कि वेस्ट हमारे शरीर से बाहर आ सके। लाइक इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन द कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय द ब्लड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर के जिस रूट से ऑक्सीजन अंदर लिया था हमने अपने लंग्स के थ्रू, वो लंग्स को फिर से वापस देगा, और जब हमने इनटेक कर रहे थे तो ऑक्सीजन ले रहे थे, तो हम जब हम एक्सेल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। स्टूडेंट्स अभी हम आए सॉलिड और नाइट्रोजीनियस वेस्ट के बारे में। नाइट्रोजीनियस वेस्ट बहुत ही खतरनाक है, ये कहां डिसॉल्व है, ब्लड में, ये ऐसे तो निकलेगा नहीं। दो वट एवर वी आर टेकिंग द फूड एंड वी आर एक्सक्रीटिंग और गोइंग फॉर द टॉयलेट और वॉशरूम, देयर दीज वेस्ट आर नॉट रिमूव्ड, ओनली द अनडाइजेस्टेड और द सॉलिड फूड पार्टिकल वी आर रिमूविंग। सो स्टूडेंट्स इसको रिमूव करने के लिए ब्लड को फिल्टर करने का स्पेशल एक मैकेनिज्म है हमारे बॉडी में, जिसे हम बोलते हैं क्या, किडनी। तो जब ये ब्लड किडनी से होकर पास करता है तो ये यूरिया, यूरिक एसिड सब हमारे शरीर से और उस ब्लड से बाहर आ जाता है, एंड दैट वी आर रिमूविंग व्हाइल वी आर पासिंग द यूरिन। सो स्टूडेंट्स तो ये आप ये समझिए, ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट और ये पार्ट जो इधर प्रोड्यूस हुआ, इसको भी रिमूव करना किसकी जिम्मेदारी, ब्लड की। सो लेट अस राइट डाउन द फोर्थ पॉइंट। So third, carbon dioxide from each cell to lungs. Then blood is all these things from where to where it will be asked. Okay, no? कल जो एग्जाम होने वाला है ये पूछा जाएगा स्टूडेंट। So write down the fourth part. The waste from cells. ये वेस्ट क्या हो सकते हैं स्टूडेंट, मोस्टली नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजन के अलावे कुछ कुछ फॉस्फोरस वेस्ट भी हम जनरेट करते हैं, दैट वी विल लर्न इन हायर स्टैंडर्ड। सो इट इज नाइट्रोजीनियस। कीप इन माइंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड वाज द gaseous product, but this nitrogenous waste is not the gas कि वो हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर आ जाए और एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर आ जाए, वो नहीं आएगा। इसीलिए इस ब्लड को उसके प्यूरिफिकेशन सिस्टम यानी कि किडनी से पास होना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो कीप इन माइंड वेस्ट फ्रॉम सेल्स टू वेयर, किडनी और एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखिए, ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट विच आर द सॉलिड वेस्ट are removed from the cell, means from the each cell via the kidney and finally to the urine passing. So this way these nitrogenous waste are removed from our body. तो यहां देखिए स्टूडेंट्स हमने जितने चीज पढ़ाए थे आपको, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन।
ट्रांसपोर्टेशन के अलावा यहां दो चीज और आ गया। एक क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ने क्या किया, ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट सेल तक पहुंचाया। मींस ऑक्सीजन लिया और फिर वो डिफरेंट सेल्स को गया, और डिफरेंट सेल्स को जाने के लिए मीडियम इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बट जब डिफरेंट सेल को ऑक्सीजन मिल गया तो उधर वो एनर्जी में कन्वर्जन, दैट इज कॉल्ड एज respiration. Students, in addition to that, whatever the waste generated inside our cell, that have to be removed. तो उसके removal के लिए we have the excretory system. So student, what is this blood system or transport system? क्या करता है, उसका function I have written. But how is this blood system? How is this entire circulatory system? We will see that in detail also. So let us come for the fourth system, students. तो हमारा fourth system क्या है? The fourth one is our, write it. यहां हमने बताया कि जब ये सेल को ट्रांसफर हुआ उसी समय सेल में ये डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी बनेगा, that is called as respiration. So write down the fourth is our respiration. This is occurring through a big system called respiratory system. Respiratory system. Students, what is happening in respiration? So whatever the simple food, मैं फिर से यहां ड्रॉ करता हूं, ध्यान दें, means whatever the complex food हमने ये कैसे लिया, माउथ में, ओके, ये अपने को गया सिंपल फूड। ये सिंपल फूड कहां है अभी हमारे स्टोमक में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली वेस्ट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए रहता है। यही सिंपल फूड फर्दर पहुंच गया, सिंपल फूड ही रहेगा, लेकिन ये सिंपल फूड अभी हमारे हर सेल्स को पहुंच गए हैं। ईच सेल्स पता है ना, एक छोटा छोटा बक्सा है जिसके अंदर बहुत सारा एक्टिविटी होता है, जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया उसको पावर देता है, कॉल्ड पावर हाउस। न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है, मींस दिस सेल इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनलीज। तो वहीं पे ये पहुंच गया एंड उसका जो लिक्विड मीडियम है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो स्टूडेंट, साइटोप्लाज्मिक रीजन में ये सिंपल फूड जाकर के यानी उसके लिक्विड मीडियम में डिसॉल्व हो चुका है। ओके, हाउ इज दिस, मोर डिटेल आई विल एक्सप्लेन इन रेस्पिरेशन। सो स्टूडेंट, ये देखिए बड़ा बड़ा हमने खाना, डोसे, चपाती, राइस लिया, सिंपल खाना यानी ग्लूकोज में पहुंच गया। मैं यहां एक एग्जांपल भी ले लेता हूं, राइस लिया, इधर एक ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज, ये भी हमारा ग्लूकोज ही है। स्टूडेंट्स, बड़ा खाना छोटे खाने में टूटना, इस प्रोसेस को हमने अभी बोला डाइजेशन। ओके नो, दिस इज आवर डाइजेशन। लेकिन ये खाना बना तो हमारे स्टोमक में सिंपल फूड, ये चाहिए किसको, हर सेल को चाहिए, स्टोमक के सेल को भी चाहिए, लंग्स के सेल को भी चाहिए, स्किन के सेल्स को भी चाहिए, टोज को भी चाहिए, हेयर को भी चाहिए, आई को भी चाहिए, हर जगह चाहिए ये खाना। ओके, तभी वो सेल जिंदा रहेंगे। तो ये यहां से हर सेल को ट्रांसफर होने के लिए हमारे पास जो मैकेनिज्म रहा ब्लड के हेल्प से, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन। ओके, अभी आप ये देखिए, ट्रांसपोर्ट होकर के हर सेल को पहुंच गया है। अब ये सेल के अंदर क्या होने वाले हैं, सेल के अंदर ये जो सिंपल फूड है इससे इसको एनर्जी मिलने वाले हैं, एनर्जी। Student, this energy is in the form of ATPs. Also, there are some ADPs, diphosphate also. तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये सेल के अंदर एनर्जी का मीनिंग है कि उसका बैटरी और एनर्जी कॉइन वो रिचार्ज होना, दैट इज द ATP प्लस वेस्ट जनरेटेड। स्टूडेंट्स, तो यहां ध्यान दें, एनर्जी तो यूजफुल चीज था ही, लेकिन कुछ भी चीज फ्री में थोड़े मिलता है, उसके साथ कुछ ना कुछ तो अच्छाई के साथ बुराई आती ही है। एंड द वेस्ट जनरेटेड
So the two things are there. So the first one, simple food to the energy which is stored in the form of ATP by the mitochondria. Okay स्टूडेंट, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो गया, इसकी चिंता मत करिए, ये यूजफुल चीज है। तो ये सिंपल फूड से एनर्जी में कन्वर्जन को बोलते हैं रेस्पिरेशन। ये कहां हो रहा है? ये हमारे सेल में हो रहा है, लेकिन इस रेस्पिरेशन के लिए इसे ऑक्सीजन चाहिए था। वो ऑक्सीजन हमने नाक के थ्रू और अपने फेफड़े मींस लंग्स के थ्रू हमने उसको इन्हीं सेल में पहुंचाया है। तो वो हम पैरेलल पाथ बाद में आपको बनाएंगे। तो यहां समझिए, सिंपल फूड से एनर्जी को प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड एज आवर रेस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट्स, इट इज आवर रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, तो रेस्पिरेशन के दौरान यूजफुल चीज बन गई, लेकिन ये प्रॉब्लम कर रहा है अभी। मींस व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? द प्रॉब्लम इज दिस वन। ओके, व्हाट एवर द वेस्ट जनरेटेड, वेस्ट अभी हमने बताया आपको, गैसियस वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड एंड सॉलिड वेस्ट लाइक नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड फॉस्फोरस वेस्ट आर जनरेटेड। इसके अलावा आपको कोई एंटीजन, एंटीबॉडी, सेल डेड हो गया, वो सब भी वेस्ट ही है, वो सारे के सारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, सो व्हाट एवर द वेस्ट जनरेटेड इनसाइड द सेल और इन द इंटरमीडिएट ऑफ द सेल, दैट हैव टू बी रिमूव्ड। सो ये वेस्ट स्टूडेंट्स क्या होते हैं? अभी आप ये समझिए, ये ओनली वेस्ट पार्ट, नॉट द ऑल। ये जाएगा फिल्टर्स को और ये जाने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को। तो एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन क्या है? ये वेस्ट को डिस्पोजल। तो ये वेस्ट पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम लिखेंगे हम लोग, इट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम ब्रैकेट में आप किडनी आप लिख लीजिए स्टूडेंट, इसको जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये वेस्ट अभी हमारे पास कहां पे है? हर सेल में है। मींस दिस प्रोसेस इज हैपनिंग इन ईच सेल, सो इट इज इन ईच सेल। अभी भी ये हर एक सेल के अंदर ये वेस्ट है, लेकिन ये या हर सेल से इसे हमारे किडनी को पहुंचना है। लाइक हार्ट, लंग्स, वी हैव द ऑर्गन किडनी, ये थोड़ा नीचे है अपने हार्ट से। हाँ स्टूडेंट, तो ये देखिए, इधर इस सेल से इस किडनी को पहुंचना है। तो अगेन ये फंक्शन कौन करेगा? फिर से ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहां काम करेगा। सो दिस इज ऑल्सो द ट्रांसपोर्टेशन बाय ब्लड। तो ये भी ब्लड का ये भी एक फंक्शन आया। अभी देखिए, जब ये किडनी को पहुंच जाएगा तो यहां से ये क्या करेगा? प्योर ब्लड बाहर देगा और वेस्ट को यूरिन में डिसॉल्व कर देगा। ओके स्टूडेंट, सो इट गिव्स द प्योर ब्लड। दिस प्योर ब्लड इज नाइट्रोजन फ्री और वेस्ट फ्री ब्लड। यहां देखिए, आप जब ब्रीदिंग करते हैं उस समय भी कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वेस्ट रिमूव होता है एंड ऑक्सीजन ऐड होकर के वो भी हमारा प्योर ब्लड है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद द टू। दिस इज द प्योर ब्लड, मींस solid waste free blood, and दूसरा प्योर ब्लड के साथ द यूरिन में, जिसमें कि वेस्ट इज नाउ आउट थ्रू द यूरिन। तो आपने ये देखा, हम लोगों ने क्या किया? खाना खाया, जो भी गंदगी हुई सारा का सारा निकाल दिया। सॉलिड वेस्ट जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए और जो सॉलिड के फॉर्म में जो रह गया एनर्जी थ्रू आवर द मॉर्निंग, आवर नेचुरल सेशन, वी आर रिमूविंग। लेकिन बाकी चीजें एनर्जी देना, एनर्जी प्रोड्यूस होना, इट इज ऑलवेज हैपनिंग एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअसली गोइंग आउट एंड रेगुलरली the nitrogenous waste is removed and blood is purified and we are passing the urine. Students, तो यहां आप ध्यान दें फिर से, this was our respiration and this is what? This process of getting rid from this waste to get the pure blood, this process is called as, means ये waste को remove से rid हो करके आपको pure blood मिलना, इसे बोलते हैं excretion। उन्हीं चीजों को बता रहे हैं।
सो दिस एक्सक्रीशन में फर्दर वापस से ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होता है, सो इट इज आवर एक्सक्रीशन। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज हाउ। अभी यहां एक चीज और आता है, we have considered as the cell and we have considered the energy that is obtained by the glucose. Students, if we are considered the each cell, in addition to this glucose, it also needs the oxygen. तो ये ऑक्सीजन कहां से आएगा? इसके लिए देखिए एक और छोटा सा पार्ट है जो इसको कनेक्ट हो जाता है। देखिए द एयर, हमने एयर लिया, एयर कहां से जाएगा अपने अंदर? नोज। ओके ना स्टूडेंट्स, सो थ्रू द नोज। अभी आपको पता है नोज से ये विंड पाइप को जाता है जिसे कि हम ट्रैचिया बोलते हैं, ट्रैचिया बोलते हैं स्टूडेंट। तो ये एयर इनटेक, एयर हमने लिया नोज के थ्रू, ये विंड पाइप को जाकर के ये हमारे कहां गया? लंग्स को गया है स्टूडेंट, ध्यान रखें, हार्ट को नहीं, लंग्स को। हार्ट को ब्लड जाता है, हार्ट 4 चेंबर होते हैं, बट एयर डायरेक्टली हार्ट को नहीं जाता है, ये लंग्स को जाता है। सो एयर इनटेक थ्रू दिस विंड पाइप to the various tubings are there. Finally it is going to the lungs. Lungs is the fine membrane. तो इस lungs में आप देखेंगे तो इस lungs के दूसरे साइड में the lungs itself consists of such a filters. ये समझिए lungs है ना, इधर से ऑक्सीजन एक साइड है, तो इसके दूसरे साइड में कंटिन्यूअसली means it is bounded by the blood circulation. इधर इसको कंटिन्यूअस यहाँ पे ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, ब्लड which is going in, finally हर जगह जाएगा, there is a network and finally it will come out. I will show in diagram also. Students, तो ये देखिए ये क्या होगा, लंग्स में आपने जो एयर लिया है, इस एयर में आपके ऑक्सीजन है अभी। So what is going to happen? This lungs here, it is the oxygen. This oxygen will diffuse here. ये इधर की ओर चला जाएगा इसमें, and this blood which is circulating here, यहां से ये blood फिर से हर सेल को पहुंच जाता है, means each cells। तो यहां देखिए ये ऑक्सीजन इस तरीके से हर सेल के पास, जब आपने खाना खाया तो स्टोमैक से आपको ग्लूकोज अवेलेबल है, जब आपने सांस लिया इससे ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है। अब ये दोनों मिल करके मींस व्हाट, दिस टू आर कलेक्टिवली, ये दोनों ही चाहिए, ये मिल करके आपको एटीपी दे रहे हैं। हालांकि इसी चीज को हमने यहां बनाया, ओके नो, इट इज नाउ गोइंग टू दिस वन मीन, तो ये एटीपी दे रहे हैं, बट इसके साथ साथ ये बहुत वेस्ट भी जनरेट कर रहे हैं, फालतू चीज भी जनरेट कर रहे हैं, प्लस वेस्ट। तो स्टूडेंट्स क्या होंगे अभी, ये वेस्ट फिर से आपको ब्लड में डिसॉल्व हो जाएंगे। यहां देखिए इसको लेकर जाने वाला ये ब्लड ही है, मींस दिस आई हैव शोन द ब्लड। यहां ये ट्रांसपोर्ट करने वाला ये कुछ भी नहीं, ये ब्लड ही है स्टूडेंट, ओके नो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मीनिंग ही ब्लड ही है। तो ये हमारा ब्लड है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो अभी देखिए ये जो वेस्ट यहाँ पे जनरेट हुआ, देखिए सेल में ये सारा का सारा कारनामा हो रहा है, तो ये वापस इस ब्लड को में डिसॉल्व हो जाएगा, ओके। अभी देखिए जब ये वेस्ट, दिस वेस्ट आर व्हाट, दिस वेस्ट कुड बी योर कार्बन डाइऑक्साइड, दिस कुड बी द नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो अभी ये देखिए जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू वापस आ रहे हैं, तो when this blood will return back, हर सेल को समझिए आप ऐसा है, ये इतना बड़ा सेल है, एक साइड से ब्लड आ रहा है इस सेल को टच करता हुआ, और ये इधर की ओर ऐसे ऐसे डिफ्यूज करेगा, इसमें से कुछ वापस जाने वाला है तो वापस जाएगा, और फिर ये ऐसा वापस भी आ जाता है, ओके नो। हर सेल को जाता है प्योर ब्लड इधर, एंड
ये इम्प्योर, तो ये इधर O2 इधर आ जाएगा, बट ये जो वेस्ट जनरेट हुआ है मीन CO2 एंड वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, that will go inside this blood. तो हर सेल almost means each of the cell is in contact with such blood vessel. तो हर सेल ऐसे ही एक्सचेंज करता रहता है एवरीवेयर। तो क्या होता है फाइनली ये जो वेस्ट आपके किसी भी सेल्स में है, ये वापस ब्लड को मिक्स होकर के वापस ब्लड कहां आएगा, वापस ब्लड दो जगह जाता है। एक तो वापस ये हार्ट में, मींस हार्ट के बाद ये लंग्स को पंप हो जाता है, दैट वी विल सी पल्मिनरी आर्टरी एंड पल्मिनरी वेन्स, ये दो ट्यूब्स हैं जिसके थ्रू ये लंग्स में जाते हैं और आते हैं स्टूडेंट्स। तो उसके बाद वही लंग्स है हमारा, जब ये लंग्स को ये समझिए इम्प्योर ब्लड जब इधर से वापस आ रहे हैं तो क्या होगा, देखिए ऑक्सीजन जाएगा, फिर यहां पे ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस इसके अंदर घुस जाएगा, मींस CO2 विल एंटर इनसाइड। तो यहां ये वापस CO2 इसके अंदर आ गया, CO2। अभी जो आपने सांस से ऑक्सीजन लिया था, देखिए फिर से वापस ये कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया, ये वापस आएगा एंड नाक से अभी आप फिर से इसे बाहर निकालने वाले हैं। सो एयर आउट, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सहालेशन। एयर को बाहर फेंकना एक्सहालेशन, एयर बाहर अंदर लेना दिस इज इनहालेशन और इनटेक। So students keep in mind here the another important point, only this much part, यानी कि सांस अंदर खींचना बाहर छोड़ना, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ब्रीदिंग केवल एक फिजिकल मूवमेंट ऑफ नोज एंड एंट्री एंड एग्जिट ऑफ एयर है। तो यहां ध्यान रखें, दिस पार्ट इज आवर ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग है। ऐसा नहीं कि सांस लेना रेस्पिरेशन है, सांस लेना रेस्पिरेशन को हेल्प करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, बट सांस लेना और छोड़ना ये केवल और केवल ब्रीदिंग। ओके स्टूडेंट, तो ये ब्रीदिंग इस पार्ट से, बट ये लंग्स में जा करके ऑक्सीजन सप्लाई किया। फाइनली जब ये ऑक्सीजन पर्टिकुलर सेल में ग्लूकोज के साथ रिएक्ट हो करके जब आपको एनर्जी दिया यहां पे, तो ये प्रोसेस है हमारा रेस्पिरेशन का। सो दिस ब्रीदिंग हेल्प इन रेस्पिरेशन बाय गिविंग द ऑक्सीजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द वेस्ट जनरेटेड, so far we have observed the CO2 have gone here. What about this nitrogenous waste? तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, ये इट इज कंप्लीट नेटवर्क एंड गोइंग थ्रू डिफरेंट रूट्स, मींस डिफरेंट थिकनेस। इसी के जब ये रिटर्न पाथ में होता है हार्ट के, तो वहां पे किडनी का अरेंजमेंट है कि वो थोड़ा सा पार्ट उस किडनी से होते हुए गुजरता है। तो किडनी के अंदर जो भी ब्लड जाएगा उसमें से ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट बाहर निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको एक और भी यहां लिंब हम कनेक्ट कर देते हैं। तो दिस वेस्ट मींस इट इज गोइंग टू दिस पार्ट एज वेल एज ये अभी आपको यहां किडनी को जा रहा है, किडनी को जा रहा है। किडनी से ये वापस कहां जाता है स्टूडेंट, यू विल सी इट विल गो टू द हार्ट एंड हार्ट फाइनली हार्ट से लंग्स को भी जाता है। इनफैक्ट हार्ट से आने वाला ब्लड किडनी को जाता है। We will see the direction correctly there, but roughly you just understand this किडनी से फाइनली ये हार्ट एंड लंग्स को ये जा करके ये भी फिर से इसी के साथ मिक्स हो जाता है। यानी ब्लड जो इम्प्योर ब्लड है वो थोड़ा सा किडनी को जाएगा, किडनी इसे प्यूरिफाई करेगा, फिर से वापस इस ब्लड ट्यूब और सर्कुलेटरी सिस्टम को डाल देगा। इस तरीके से ये जो किडनी में आपको here this kidney is removing nitrogenous waste. So this is the excretion. Okay students, so excretion occur in the kidney. So this way the entire life process, यानी कि आपने खाना खाया, खाना से आपको एनर्जी मिलता रहा, वेस्ट जनरेट हुआ, उसे आप रिमूव भी कर लिया। दिस वे
the complete cycle is happening again and again, and the organism or the living organism can survive. क्योंकि ऑर्गेनिज्म का रिक्वायरमेंट क्या था, कंटिन्यूअस उसे एनर्जी मिलना ही चाहिए, यदि उसे एनर्जी नहीं मिलेगा वो सेल डेड हो जाएगा. तो दिस वे दिस सिस्टम्स आर फंक्शनिंग. तो हमने अभी आपको इंटीग्रेटेड तरीके से हर चीजें बताई. ओके स्टूडेंट, एंड इन द मीन टाइम बीच बीच में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हैं. सो इसको आप देखिए, आई विल ऑल्सो अपलोड द वीडियो. सो लेट अस समराइज. इसको अब हम फाइनल समरी यहां पे लिखेंगे. स्टूडेंट्स, व्हाट इज आवर समरी? वी विल जस्ट समराइज, देन वी विल स्टॉप द क्लास. दो ऐसा मत समझिए चैप्टर ओवर हो गया, हम आपको एक क्लास और समझाएंगे, बट पीपीटी की हेल्प से समझाएंगे. यदि आपने ये समझ लिए हैं तो आप पीपीटी इजीली समझ पाएंगे, नहीं तो बुक में लिखे हुए पीपीटी ये बहुत हेल्पफुल नहीं होते हैं वेरी फर्स्ट टाइम में समझाने के लिए. सो समरी इज व्हाट स्टूडेंट? अभी हमारा लाइफ प्रोसेस होने के लिए, यानी क्या, इफ वी आर कंसिडरिंग द लाइफ प्रोसेस, दिस स्टार्ट्स विथ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज व्हाट? हमने अभी बताया न्यूट्रिशन यानी कि फूड आपने लिया, फूड इनटेक, और एनर्जी इनटेक. डायरेक्ट आपने एनर्जी और फूड आपने लिया. तो पहला प्रोसेस जो इन्वॉल्व है, इट इज आवर न्यूट्रिशन. ये जो फूड है ये हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है. इट इज द कॉम्प्लेक्स फूड. सो दिस कॉम्प्लेक्स फूड नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू द सिंपल फूड. तो यहां पे हमें बनाने हैं सिंपल फूड. कहां? स्टोमैक में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो ये कन्वर्जन का जो प्रोसेस है, मींस द इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन, or preparing the food is called as nutrition. But this conversion, there comes the second point called as our digestion. So digestion starts here. So the very first was our nutrition. Nutrition means simply it is the intake of direct energy or the food or raw material for the food. So it is our nutrition. Students, लेकिन ये फूड अभी हमारा स्टोमैक और इंटेस्टाइन से हमें जाने हैं कहां पे? हर सेल को. So there comes the transportation. ये ट्रांसपोर्टेशन रिवर्स भी होगा ऑक्सीजन एंड दूसरे चीजों के लिए और आगे मूवमेंट के लिए, बट हियर फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन अकर हियर वेयर द सिंपल फूड इन सेल्स. ये सेल को चला गया. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट कम्स अगेन द respiration. This is the fourth process which is involved. रेस्पिरेशन में क्या हुआ? ऑक्सीजन आपको ट्रांसपोर्ट किया गया एंड सेल के अंदर ये सिंपल फूड से आपको एटीपीज मिलने वाले हैं. देन वी आर गोइंग टू गेट द एटीपीज. इट इज adenosine triphosphate. Okay student, sometimes full form is also asked. So it is the energy currency plus wastes are generated. Students, तो ये तो यूजफुल है, it is useful things. Now the next comes the waste removal. तो ये देखिए waste का removal, that is called as, write down the fifth process called excretion. So this way waste removed, waste rid of, यानी अपने बॉडी से वेस्ट को हम लोगों ने बाहर फेंक दिया, इसे हम बोलते हैं एक्सक्रेशन.
इवन ये वेस्ट को कैरी करने के लिए, सो दिस एक्सक्रीशन और दिस अकर एट किडनी एंड here the transportation also involved. Okay ना स्टूडेंट, यहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है। और इवन ये वेस्ट हमारे किडनी में ही नहीं, एट लंग्स also by the transport system ये इधर गया। इतना ही नहीं, और भी there are ways of removing or getting rid of the waste like our skin। देखिए स्किन के अंदर से भी बहुत सारे वेस्ट डायरेक्टली बाहर आते हैं। ओके, like this sweating, sebaceous gland, so various glands are there, but आपको broadly यही जानना है। ओके स्टूडेंट, so this is all about the things। तो हमारा कैसे होता है पूरे चैप्टर में, so all these process are life process students, these are assisted by other system like the gland system, our nervous system। nervous system क्या करेगा, कौन सा काम कब करना है, यानी क्या, say when you will feel that excretion means passing the urine, it is controlled by the nervous system। when you will feel the hunger, you will take the food। so right above process, right, just one more thing, so above life process is assisted by other system, other organ system। system means the organ system, क्योंकि लाइफ और लिविंग बीइंग के लिए क्या है, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ओके ना, तो अदर ब्रैकेट में आप लिख ही लीजिए, ऑर्गन सिस्टम like our glandular system, glandular or gland system। another, इसे डाइजेशन के लिए कौन सा केमिकल कब चाहिए रिलीज करना है, दे आर द एक्सिलरी सिस्टम, मींस डाइजेशन एंड एक्सिलरी सिस्टम, दैट इज आल्सो द ग्लैंड सिस्टम बेसिकली। अनदर द कंट्रोल ऑफ द बॉडी, जैसे आप चले तो आप एक पर्टिकुलर रास्ते में चल पाते हैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा इधर चला थोड़ा इधर चला। आप देखते हैं ना, ऐसा कौन करता है, व्हेन द पर्सन बिकम मैड, जब पागल हो जाता है। तो उसका मतलब क्या होता है, पागल होने का मतलब कि उसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो ढीला हो गया है। दैट सिस्टम इज कॉल्ड द नर्वस सिस्टम। तो राइट, नर्वस सिस्टम ETC। बाकी ज्यादा सिस्टम आपको पढ़ने नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी भी इतना बहुत सारा चीज है, लेकिन आपको जितना चाहिए उतना पक्का समझिए। एंड व्हाइल अंडरस्टैंडिंग कीप इन माइंड इट मस्ट बी इंटीग्रेटेड, क्योंकि आपने यदि इस चीज को अच्छे से समझ लिया, बहुत सारे आंसर आप जस्ट इन्हीं चीजों को समझ करके कर सकते हैं। ओके, और ये यदि आपने नहीं समझे तो कौन सा चीज कहां से आता है किधर जाता है, यू कैन नॉट आंसर वेयर विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व। इवन the student are completing the class 10th and they are not able to define what is digestion। ओके, डाइजेशन का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, डाइजेशन का मीनिंग वो ये समझते हैं खाना खा लिया तो जो एनर्जी मिल गया, या तो वो डाइजेशन बोल देते हैं। स्टूडेंट, खाना खाने से डायरेक्ट एनर्जी मिलना इज नॉट द डाइजेशन। डाइजेशन इज जस्ट अ पार्ट वेयर द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू द सिंपल फूड मॉलिक्यूल। खाना खाने से एनर्जी तक मिलने में दो चीजें इन्वॉल्व है, पहला डाइजेशन, दूसरा रेस्पिरेशन। मींस first digestion, transportation and respiration, three things are involved, but minimum you have to tell the two things are involved। first is digestion, then respiration। तो respiration का मीनिंग है कि ये जो सिंपल फूड है उससे आपको एनर्जी मिलने वाला है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने चाहिए, तब आप सारे के सारे आंसर कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, this much whatever I had explained was the very basic thing or the integrated form of the chapter।